It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Very good morning all of you guys. Welcome to the session back. Welcome back to the session. So generally Monday मुझको थोड़ा सा काम है सुबह क्लास के बाद 10:30 आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किया. कल से हमारा टाइमिंग सेम 10:30 to 11:30 एज इट इज़ रखेगा. ओनली मंडेज में कुछ दिक्कत है तो उस समय पे मैं चेंज करता हूँ. बाकी समय पे सेम टाइम 10:30 to 11:30 वी विल टेक द क्लास. ओके, आज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देना चाहिए. सो अभी तक जो डिस्कस किया ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको डाउट्स है. ओके, देन वट एवर वी कैन से प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशल क्लास लेता हूँ आज. सो टाइम फॉर दैट स्पेशल क्लास इज 12:30 PM. आई विल बी गिविंग यू द लिंक. इट इज़ अवेलेबल ऑलरेडी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. ओके, so we'll discuss about it. So I'll give you the link in the chat also. Let's start. So just a moment. Right. So let me give you a few inputs about Unacademy Plus subscription. If you want to take Unacademy Plus subscription, guys, इसमें क्या क्या benefits है, let me give you. You can have a structured batches for GATE and ESE which will complete your syllabus in an exhaustive way by all top educators of the country. And unlimited access to all the courses of all educators. You can choose your educator. You can watch any class of your wish without any restriction.
You can have regular doubt sessions. After every 3 sessions, one session is completely dedicated for doubts. You will get notes in the form of what we call immediately after the class, and you can learn live all these from your home itself. इसके अलावा you have so many features like test series is free, previous year questions are free for you, and you can have the practice questions. All these you have in the class itself. It is more interactive our classes, and इसके अलावा you have the raise a hand option where you can send voicemail to the educator and you can chat with the educator through voice. All these are the features of Unacademy Plus subscription. So why to take the Plus subscription, sir? If you have a classes in the YouTube means, see, to get the live classes on time, first thing. Second thing ये होता है, you have a choice of educators on Unacademy Plus, because you have all the top educators. You can select your, you can select your educator of your choice without any restrictions. And also you have, it is a dedicated learning platform. Suppose if you see YouTube में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है तो डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बट वहीं पे यू हैव द रियल फील इंटरैक्टिव क्लासेस होता है. यू हैव ए पर्सनलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग. सो आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग चाहिए तो दैट इज यू नीड समवन टू गाइड यू, टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. पर्सनल कोच को यू कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें यू गेट ए स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा यूजिंग बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन द एग्जाम्स. आपको प्रिपरेटरी मटेरियल मिलेगा, डिटेल्ड doubt clearing instructors milega, and recorded lectures of CS80 by RBR sir you will be getting for free. So these are the prices, guys, for Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So for Plus subscription, these are the original prices, but yes, you have an option. Just apply the code Shankar10. If you like my teaching, whenever you or your friend, anybody joins, use the code Shankar10. This is for any course in Unacademy. You will get the 10% discount, and these are the final prices for 2 years, 18 months and 1 year. If you want to take Iconic, these are the prices. Here also you can use my code. You will get 10% discount, and these are the prices for 2 years, 18 months and 1 year. Okay. So these are the new batches started on the last week for GATE and ESE, and also for ESE specific extra subjects also started by me on 1st September, daily 7 a.m. to 9 a.m. for microprocessor. Okay. So this is the offer running on right now. If you take 6 month subscription, आपको 3 महीना free pay मिलेगा. Okay. So we'll be talking. So this is right now it is available. So you can use the code and join. बाकी features के लिए we will talk again. So let's continue with the session. So last lectures हम थोड़ा सा revise किया तो मैं तो numbers का conversion बताया. I have given you the numbers conversion. How to convert one number system into another number system we have discussed, and we are done with some problems. Then last lecture I have discussed you, or I have given you what we call R's complement. Why R's complement implement, what is the advantage of it, how it can help you to do this subtraction with the help of R's complement. Those things we have done with the help of 1's complement, 2's complement, 7's complement, 9's complement. All these things we are done, right? So now let's move for the next part called BCD codes. हम आगे चलेगा next वाला part पे, that is your BCD codes. ठीक है, चलो. बहुत बारिश हो रहा है मेरा प्लेस में. अगर सडनली पावर गया तो क्या करना मुझको भी पता नहीं, बट लेट्स होप इट विल नॉट गो. Okay, so let's start. Okay, so BCD codes. Listen here. What is the meaning of BCD code? Binary coded decimal. Okay, binary coded decimal क्या होता है sir? Here every single digit is represented in the form of binary. Let me explain that with the help of example.
just a moment. Okay, so see here, so let me take one example. Suppose I have a number 25. So what is the binary equivalent of 25? Binary equivalent of 25 is if you 16, 8, 24, right? This is the binary equivalent of 24. 25 ka binary equivalent is this one. So 8, 4, 2, 1, 16. 16 plus 8, 24 plus 1, 25. Fine. So now BCD का मतलब क्या? First let me explain the meaning of BCD. BCD का मतलब क्या है? इसके बाद after that I will be explaining you the what we call advantage of BCD. BCD का advantage क्या होते हैं वो भी explain करेगा. इसके पहले listen here 25. In the BCD what we do is we separately represent 2, we separately represent 5. That is 2 को separately represent करेगा, 5 को भी separately represent करेगा. So what is 2 separately? 0, 0, 1, 0. What is 5 separately? 0, 1, 0, 1. At least first 16 binary numbers and its decimal equivalent you should compulsory know it. Okay. So listen here. So 25 is 2 and 5 separately. Okay. This is what we call, technical name is packed BCD. Then 25, okay, I can write 2 separately. Okay, 2 is separate. Okay, but for 2 add 4 zeros. 5 separate. For 5 also add 4 zeros. इसको कहते unpacked BCD. I will explain, don't worry. पैक्ड और अनपैक्ड में कोई डिफरेंस नहीं, तो एक ही सिंपल चीज़ है, एक डिजिट के लिए इसमें 4 बिट वी कॉल इट एज एक निबल चाहिए, बट इसमें एक डिजिट के लिए 8 बिट चाहिए. सो हियर 2 के लिए यू राइट 2 एंड 4 जीरोस ऐड करेगा. क्यों करना सर? मेमोरी पे ईच डिजिट इज स्टोर्ड इन 1 बाइट. memory is generally each byte will be in one location. Address of the memory is addressed with the help of bytes. So here sometimes with respect to memory access it will be helpful. Fine. चलो 25 को 2 अलग से लिखना, 5 अलग से लिखना, इस केस में आपको BCD आएगा. सो नॉर्मली डायरेक्टली लिखेंगे तो इसको कहते हैं पैक्ड BCD. 4 बिट में एक डिजिट रिप्रेजेंट करेगा. बट अनपैक्ड BCD में क्या होता है सर? 2 के लिए 2 विथ 4 जीरोस, 5 के लिए 5 विथ 4 जीरोस ऐसा रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल अनपैक्ड BCD. ठीक है, चलो लिसन हियर. यही तक सबको क्लियर है ना? यस गुरु. ओके, सो फाइन. नाउ फर्स्ट इमीडिएट डाउट आपको आएगा, सर व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस? सर इसमें क्या एडवांटेज है सर? बीसी में कोई एडवांटेज है क्या सर? Because if you write like this, less number of bits I am able to represent, but here I am writing 2 separately, 5 separately. It requires more area sir, more time, it is more space it is taking. So what is the advantage of the BCD sir? BCD लेना क्यों सर? इसका जरूरत क्या है? What is the advantage of representing the number in the BCD? So let me explain that. Okay, so listen here. So please see, fine, chalo listen here carefully. So what is the advantage? Suppose see here, I want to display the numbers from 0 to 9. इस डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करेगा सर? I will have one 7 segment code. Okay, 7 segment LED display. You can see that in the next slide. See here, आपने नंबर टाइप किया तो वो तो डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेटअप मैंने बनाया. और एनी टाइम वेन एवर यू सी इन योर AC में टेम्परेचर और कहाँ कोई भी जगह पे यू वांट टू रिप्रेजेंट योर रिजल्ट, यू जनरली यूज दिस इन योर लैब और वॉट एवर. इसको कहते हैं 7 segment डिस्प्ले. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. Suppose I want to represent 0 to 9. क्या होता है सर? If you give the namings to this register, what we call LEDs, A, B, C, D, E, F, G. So if you want to represent 0,
like this 1 2 like that 9 ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इस केस में सारे एलईडीज को 1 आना चाहिए, इसको 0 आना चाहिए। यू शुड स्टोर इट इन ए कोड, से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड सम डोंट केयर ले लो। हियर इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 0, क्या करना, ये सभी वंस होना चाहिए एक्सेप्ट जी, ओके, इसको डोंट केयर 0 ले लो। सिमिलरली इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 1, क्या करना, you may be representing these two as ones, बाकी तो 0। नेक्स्ट 2 के लिए एक्सेप्ट सी एफ, सी और एफ को 0 करो, बाकी को 1 करो। दिस इज ए डोंट केयर। लाइक दैट यू कैन रिप्रेजेंट अप टू 9। 9 के लिए क्या करना सर, 9 के लिए you should represent all LEDs except E, सारे LEDs ऑन करना except E, then मेरा डिस्प्ले पे 9 आएगा। So whenever I press 9, this input should go to the display, then it will represent your required number। ठीक है सर। So what is the hexadecimal equivalent of this EFC? 0C, then 13 is ABCD 6, and here it is F6 hexadecimal। Like that you can have the codes, इसको कहते कोड। So कंप्यूटर जी क्या करना चाहिए, when it want to display 0 to 9, it should store 9 codes। whenever you press the particular number, उस कोड आपका LED को जाएगा, कोड के अकॉर्डिंगली you will get 1s and 0, those LEDs will be on। this is fine sir, no doubt in it, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट क्या दिक्कत है सर, अगर सपोज you want to have, this is a single digit के लिए मैंने बताया, if you have 2 digit display, मेरा पास 2 digit display है तो ओके, सो 2 digit है। आप लोग कमेंट करो 2 digits में मैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते सर, 0 0 to 99, 0 0 to 99, okay, you can represent 0 0 0 1 1 0 1 1, okay, like that 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, कहाँ तक लिखना, 99 तक लिखना, okay। so here 100 different patterns आएगा आपको, 100 different patterns को if you want to make this kind of code for every, okay, suppose here 44 in the binary you have, because the computer को input जाएगा binary पे, if you press 44 binary पे, what is the equivalent of 44, 32 8 4, okay, so 45 like that 99, okay, 0 0 से 99 तक if you take 99 के लिए क्या करना, so here please understand, when 0 0 0 0 comes, the computer will convert into this format and it will give this to the LED display। whenever 0 0 0 1 comes, it will do like this। whenever 0 0 1 0 comes, the computer क्या करेगा सर, 2 के लिए ऐसा करेगा। whenever 9 comes, 9 आएंगे तो कंप्यूटर जी ऐसा करेगा, ठीक है सर, सही है। अभी 99 आएगा तो 64 32 कितना होता है सर, 96, 96 प्लस 16 8 4 2 1, so like that it can generate here। please understand, if you straight away represent your number in the binary, इस वाला एग्जाम्पल्स में दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है सर, फॉर 2 digits you should make how many patterns, 100 different patterns, क्योंकि if you have 0 to 9 in 1 digit, you made 10 different codes and computer stored 10 different codes, and whenever you get 9, it will give this as the output and accordingly your display will represent 9, fine। but here क्या होता है सर, मेरा पास 2 digit है, 2 digit can go from all zeros to all 9s, that is 0 to 99।
So 0 to 99 if you give, you binary may you get 100 different representations. So for every representation you should design a circuit such that whenever that particular input comes, it should give its corresponding code. Like that, if you have 10 digits, then you should have 10 power 10 different codes. Is it feasible? Display में आपको 3 digit में 2 digit में 100 codes you need to generate. In 3 digit you should generate like this 100 different patterns, and each pattern में you should do some different display. It will be a difficult task, or you can say आपका memory waste होता है. So इस case में क्या करेगा सर? In this kind of examples, we take the help of BCD. So BCD से क्या advantage होता है सर? If you have 45 in the BCD, हम क्या करेगा सर? 4 और 5, 46, 4, 6, 99, 9, 9. इसका मतलब कोई भी डिजिट ले लो, every digit is in the range of 0 to 9. If you read here, this range is 0 to 9. Here you have 0 to 9. Irrespective of number of whatever we have, the number of digits you have, the number of symbols or codes कितना होता है सर? केवल 9 only. Previously you should have 100 codes. 2 digit में to display it you should have 100 codes. Whenever that particular number comes, it should convert into its corresponding code and give it. But यहीं पे ऐसा नहीं. If you are able to represent like this by some mechanism, when it comes, this will take care of one display digit. This will take care of one display digit. Each digit is in the range of 0 to 9. So what happens here? इसमें क्या होता है? ये एक 7 segment display को deal करेगा, ये एक 7 segment display को deal करेगा. जैसा if you have n number of digits also, you no need to store all the codes. You should store only 10 codes. वो तो repeat हो जाएगा here. इसमें कोई दिक्कत है तो please ask me. Don't say repeat, okay? आपको क्या दिक्कत है तो वो बताओ, मैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस करके फिर एक्सप्लेन करेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, yes, that is no problem, Hariram. It is fine. It is depending on your own way of representing the number. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. So now you understand the advantage of BCD or not? BCD में क्या advantage होता है सर? केवल और केवल मेरे पास 10 codes display systems में it will help more to represent the numbers easily. Because our day-to-day life we deal with the decimal numbers only. So this kind of codes, they are not only this example, I will show you a few more examples and few more advantages. There you have more and more advantages. Okay, thank you guys, thank you. चलो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देना चाहिए. जस्ट ए मिनट, एक मिनट. जस्ट ए मिनट, मैं तो लिंक भेज रहा हूँ आपको. ठीक है. सी गाइस, आई एम सॉरी. या आज 12:30 PM पे मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ आपके लिए. टुडे 12:30 PM. ओके, इसका लिंक विल बी कमिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. इवन यू वॉच इन द रिकॉर्डेड पीपल, उन लोगों की वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा फॉर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. आई मीन अप टू नंबर सिस्टम्स. आज तक हम हर 3 क्लास में एक स्पेशल क्लास मिलेगा आपको. 12:30 PM पे क्लास है, ठीक है. एंड दैट इसका लिंक यू विल बी गेटिंग इन द चार्ट नाउ एंड ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन इट विल बी अवेलेबल. ओके, लेट्स मूव. नाउ सी हियर. सो BCD में हमारा इंटेंशन क्या? एवरी सिंगल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड सेपरेटली. ईच डिजिट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 9.
सो बीसीडी में नॉर्मल बाइनरी का वी कॉल इट एज नॉर्मल बाइनरी बीसीडी को, प्लीज लिसन हियर. सो इन द बाइनरी बीसीडी का दूसरा नाम इज कॉल्ड 8421 कोड. Why it is called 8421 sir? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. 8421 को कहते हैं पोजिशनल वैल्यू सर, वेट ऑफ द पोजीशन. सपोज मैं तो 0 0 0 0 रखा, इसका वैल्यू कितना, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रखा मैंने यहीं पे, इसका वैल्यू कितना, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 इज इन द पोजिशन ऑफ 1 ना, इट इज 1. सपोज सेम 1 इज केप्ट हियर, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, इट इज एट द पोजिशन ऑफ 2. इफ यू कीप 2 ones, 2 प्लस 1 आएगा 3, 4, okay, then 5, 6 is 4 plus 2, 7 is 4 plus 2 plus 1, 8 is 1000, and 9 is 1001. 8 plus 1 9 होता है ना. Like that you can see here 0 1 0 1 0 1, blind way of representation, 2 0 2 1 2 0 2 1, 4 0 4 1 आएगा. But if you want to know the number value, सपोज 1101 मैंने बताया, इसका वैल्यू कितना, सिंपली टेक हियर 8421, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13. ओके, बट हियर इट इज नॉट, आई एम सेइंग इन बाइनरी. बीसीडी में यू हैव 0 to 9 ओनली. ठीक है, सो अगर 5 डिजिट है तो यू कैन हैव 16 हियर, 32 हियर एंड सो ऑन टू कैलकुलेट द नंबर इजीली. चलो, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट बीसीडी कोड्स अवेलेबल विद अस. सो द डेसिमल नंबर 0 से 9 आपका बीसीडी कोड्स क्या होता है सर, 8421 में 0 to 9 में तो एक्सप्लेन किया, इसको कहते हैं वेटेड नंबर सिस्टम्स. 8421 क्या होता है सर, इट इज वेटेड. ओके, ये सभी वेटेड होता है. वेटेड में पॉजिटिवली वेटेड होता है, नेगेटिव वेट्स भी होता है, इसमें नेगेटिव वेट्स है, ये तो पॉजिटिव वेट्स, बट ये तो दिस इज अनवेटेड. मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं. बहुत बारिश हो रहा है. ठीक है, अनवेटेड. सो लिसन केयरफुली. हियर प्लीज सी केयरफुली. 2421 का मतलब क्या होते हैं, 2421 इज द वेट्स ऑफ द कोड्स. सो 2421 इज द पोजिशनल वेट ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर एंड ए नंबर. इससे एडवांटेज क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेगा. आई विल एक्सप्लेन यू द एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो. बिफोर दैट, what is the value of 1 sir? Simply 1. How to write 2 sir? 0 0 1 0. Okay, 3 is 2 plus 1, 4 is directly 1, 5 is 2 plus 2 plus 1, 6 होता है 4 plus 2 और 2 plus 4, 7 is 2 plus 4 plus 1, 8 is 2 plus 4 plus 2, 9 तो 2 plus 4 plus 2 plus 1. ठीक है सर, सही है. आपको एक डाउट आएगा, क्या डाउट सर? सर आपने 6 को why you take 2 plus 4 sir? Why can't you take 4 plus 2 sir? You can also write 6 equal to 0 1 1 0 ना, ऐसा क्यों ले लिया सर? You may have the doubt. Similarly, 5 can be written as 0 1 0 1 na sir. Why you take it as 1 0 1 1? I will explain that reason guys. Okay, don't worry about it. I know you will have that doubt. I will explain that reason. इसके पहले 84 minus 2 minus 1. Here the weights are negative. Negative weights में if you want 0 it is fine. If you want 1, 4 minus 3. Okay, if you want 4 directly, sorry 2, 4 minus 2. If you want 3, 4 minus 1. 5 is 8 minus 3. Or 4 is 0 1 0 0. 5 is 8 minus 3. 6 is 8 minus 2. 7 is 8 minus 1. 8 is only 8, 1 0 0. 9 is 12 minus 3. This is about your 8 4 minus 2 minus 1. Lastly, excess 3. Excess 3 में क्या होता है सर? ये नंबर्स है ना, इसको 3 ऐड करके यहीं पे लिखो. 0 को 3 ऐड करो
3 आएगा, 1 को 3 ऐड करो 4 आएगा ना, 4 का मतलब 0100, 2 को 3 ऐड करो 5 आएगा ना, 0101, 3 को 3 ऐड करो, 3 को 3 ऐड किया तो 6 आएगा, 4 को 3 ऐड करो 7 आएगा. ओके, सो हियर इफ यू हैव ए नंबर, इसको 3 ऐड करके रिप्रेजेंट करेगा. सर ऐसा क्यों कर रहा है सर? Why you are doing adding 3 only sir? Why can't you have excess 4, excess 5 or excess 6 or excess 7 code sir? Is there any speciality by adding only 3? Yes, there is a importance for it. You can observe. Okay, you may know excess 3 का meaning क्या, but why excess 3 only? Why not excess 4 or excess 5? I will explain. Listen. If you see this number, its complement is here. 0011 is its complement is just replace 0 with 1, 1 with 0. Next, if you see 0100, what is its complement? 1011. 0101, 1010. 0110, 1001. 0111, 1000. These are complementary to each other. If you have this kind of pattern, it is there here also, you can see. All zeros, 0111, 100, 0110, 1001, 0101, 0100. You can see they are complementary, first and last, second and second last. Here now you will get the answer. Sir, why you take 6 as 2 plus 4, why not 4 plus 2? Because if you represent like this, it's have a property called self-complementary. राइट सर, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब टेक्निकल डेफिनेशन क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो दीज 3 आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री. आई कैन एक्सप्लेन दैट. ओके, सो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, सम ऑफ वेट्स equal to 9. If you add these weights, okay, this is self complementary. This is not self complementary. Okay, it is not self complementary. This is self complementary. 2 plus 4 plus 2 plus 1, 9. 8 plus 4, 12 minus 3, 9. Not every time it happens. Okay, this is not a self complementary. This is not a weighted at all. No weights at all. Okay, now listen carefully. Okay, what is the meaning of self complementary? I will explain it. First, इससे एडवांटेज क्या होता है सर, वो सभी डिस्कस करेगा. इसके पहले प्लीज लिसन, बिकॉज इट इज सिंपल इफ यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई इट इज और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट, कहाँ पे यूज करेगा वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो विल डिस्कस दैट. बिफोर दैट लिसन. सो व्हाट इज द एस्टरडे क्लास में हमने, एस्टरडे का मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ये वाला पार्ट. व्हाट इज दैट? नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर. ओके, इससे एडवांटेज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में आपको मदद करेगा. इट विल हेल्प यू इन द सब्ट्रैक्शन टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ एडिशन. ओके, सपोज यू वांट टू डू a minus b, you can do it with the help of a plus 9th complement of b. This is for which kind of number sir? For decimal numbers. It will help you. Okay, 9s or 10s, anything. In 10s we neglect the carry, in 9s we don't neglect. That is the difference. Otherwise you can say it is both the cases may same. Okay, now listen here. What is the advantage of self complementary code is, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर. जनरली नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने कल लास्ट टाइम में व्हाट आई टोल्ड, you need to subtract each digit from 9. Then I told, then you got the doubt, sir. I'm sorry, yaar. Last time I told you, 9th complement is obtained by subtracting each digit from 9, and I told the advantage is it will allow you to do the what we call subtraction with the help of addition. Then you people got the doubt, sir, anyway you are doing the subtraction in the 9th complement now, what is the advantage? Now I will show you. In this case, without any subtraction, you can find 9th complement by simply finding its 1's complement. For binary 2's complement is already you know 1's complement plus 1.
For that, we don't do subtraction, we just complement. Okay. Now, that is the advantage of self-complementary code. What is the meaning of self-complementary code, sir? 9's complement always equal to 1's complement is the condition compulsory satisfied in the self-complementary code. Okay, let me give you one example, then you will get more clarity. So, listen here. एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक्सरसाइज 3. See, I want to tell you one thing seriously. Most of the YouTube initiatives are going to dilute over a period of time. ठीक है? So because of the non-seriousness of the people who are preparing here. Okay. So maybe I will also stop my YouTube classes. आप लोग already आप लोग ने देखा, मैं तो कम किया because I lost interest because of the attitude of the students who are attending the classes. ठीक है? मैं तो I mean we are always happy to give you more, but we will expect the same sincerity. ठीक है? आप लोग तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट दिन पे आ रहे हैं, सेकंड दिन पे इसमें अर्धा आएगा, इसमें अर्धा, हमेशा इसके बारे में डिस्कस करना भी नहीं चाहिए मुझको. आई डोंट वांट टू डिस्कस मेरा क्लास पे आओ, वो लाइव पे आओ, वो कंपलसरी लाइव पे आना. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दैट. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल टू डू दैट. ओके, I will do my work. Okay, when I see the response is not okay, I decided okay, I can dedicate the time in a place where the students are really interested. Okay, इसलिए मैं तो ज़्यादा time अभी तो I'm giving the time in the place. Maybe this is the last batch for the YouTube guys. I will be taking. Maybe I will take some marathon sessions and all. That is what required for the YouTube. Comprehensive courses and all those may not be coming from my side. Anyway, I have given it in the recorded form. Those who want to study, they can study, because anyway people are studying in recorded only. Why to waste my energies? What is the decision I have taken already from few months back itself, but I am revealing it to you guys. So that is the reason my what we call presence has decreased on the YouTube. Okay, it will decrease further also in the future. I'm not very happy with the what we call I don't want to spend my energy here. Instead of that, I want to spend the energy where the students are really serious. But you people can ask, sir, हम लोग तो आ रहे, we are really serious ना sir, why are you, why can't you help us? Definitely I will help you. Once I start the initiative, I will complete it, no doubt. After that, recorded me, it is available, everybody, every year they can study. And iska updates, etc. I will every time take. I will do the special classes. I will support you, but in a different way, guys. Okay, that's why this course, actually I want to teach in a comprehensive course of 80 hours, 90 hours on YouTube itself. But I thought, okay, starting they will come, 10 hours ke baad they don't come. Every time we are seeing the same. So why to waste our time? इसलिए decide किया, take a crash course, do the classes of the special problems. We will wind up early. Okay. See, इस क्लास के लिए I told you ना बहुत बारिश हो रहा है. मेरा studio is somewhere, my home is somewhere. Morning I went to temple. I came back immediately. I ran away in the rain. I came to the class. Even I don't have the time to take the breakfast also. Morning I took a little part, but morning 7 से मैं तो class ले रहा हूँ, 7 to 9 ले लिया. But again मैं तो लेना चाहिए, but time हो गया. Okay. After this class I will take for 5 minutes, 10 minutes. Again 12:30 I have a class of your special class. उतना क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग पढ़ने के लिए? That is if a teacher is showing this much sincerity, student should show much and much sincerity for their own studies. I'm not saying मेरा क्लास में कंपलसरी आना. आप लोग पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा रेगुलर होना चाहिए. इन्हीं ओके आपको हमेशा बोलते हैं सर कॉलेज क्लासेस चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये हो रहा है सर. रीजंस हमेशा होता है, रिजल्ट एक ही बार आता है. फॉर दोज हु आर सिंसियर, दोज हु आर हैविंग डिसिप्लिन. इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट, रीजंस बीच में नया आएगा भाई. ओके, दिस इज जस्ट आई वांट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन. दोज हु आर कमिंग ना, उन लोगों के बोल रहा हूँ. प्लीज व्हाट वी कॉल यू शो योर सिंसियरिटी. सपोज गेट रैंक में ये होता है, इतना लोग अप्लाई करेगा, इतना लोग लिखेगा, इतना लोग अच्छे से लिखेगा. दोज हु प्रिपेयर प्रॉपरली एंड दोज पीपल विल अचीव. दोज पीपल आर यू ओनली. यू कैन सी फर्स्ट डे इतना दिन इतना लोग आएगा कोई भी क्लास में. Okay, teacher can teach the best. He is the best. He came from the space and teaching here also same happens. First दिन आएगा देखते कहाँ से आए भाई, स्पेस से आएगा, पीके जैसा है. ओके यार देखता हूँ, ठीक है. सेकंड दिन अरे यार ठीक है, थर्ड दिन जाएगा. ओके, यूट्यूब में ये होता है. इवन वी ब्रिंग द बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, whoever may be, even from the space we bring here and we teach you. You people are not, some people are not serious. ठीक है. See, suppose if you are attending the class, you are already in a edge compared to those people.
वो लोग जो होता है ना वो तो इरेगुलर वाला लोग होते हैं ना, उनसे आप लोग को थोड़ा सा एज ऑलरेडी है, बिकॉज यू आर इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू आर डूइंग गुड. दोज हु आर अटेंडिंग ना, उन लोगों के बोल रहा हूँ, you are definitely doing good. Continue it with the same what we call discipline in every single class. You will definitely see the success. Okay, so let's move. So exercise 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने, ठीक है. सो इस कोर्स में थोड़ा सा भी आई डोंट डिवेट, इस कोर्स तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, नो डाउट इन इट. ओके, दिस इज फॉर श्योर. मैं एक बार स्टार्ट करने के बाद आप लोग आओ नहीं तो कल मैं बंद करेगा, ऐसा नहीं. मैं तो प्लान बताया ना, दैट प्लान आई विल इम्प्लीमेंट फॉर दोज हु आर कमिंग. आई विल डेफिनेटली डू इट, नो डाउट इन इट. सो लिसन हियर, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए नंबर 7, ठीक है. एक्सएस 3 में 7 को कैसा रिप्रेजेंट करेगा सर? 1010, बिकॉज 7 का एक्सएस 3 कोड इज 10. 10 मीन्स 1010. फाइन. लिसन हियर, व्हाट इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7? 9th complement of 7, 9 minus 7, that is 2. So in the excess 3, what is the 2 sir? 2 is 2 plus 3, 5, that is 0 1 0 1. What is 1's complement? 0 1 0 1. दोनों केस में आंसर्स तो सेम. I hope you got this concept. आपको इस concept तो clear है गए. बस guys please tell me exercise 3 में क्या होता है सर? If you directly find 1's complement of this number and find the 9th complement of this number, दोनों केस में आपका result same आएगा. Not only in exercise 3, in any self complementary code, this particular rule will be satisfied. 9th complement of a number is always equal to 1's complement of that particular number. It will help you to make this 9th complement without subtraction. Just by complementing, you can find the 9th complement in this way of representation. Is it fine? That's why there is excess 3 but no excess 4, because excess 3 will satisfy that condition of self complementary. Okay, thank you. Okay, Shriya, I am not saying for those who are coming regularly, उन लोगों को हमेशा आई डोंट स्टॉप दिस पार्ट. एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो मेरा माइंड पे ये होता है, आप ऑलरेडी मेरा क्लास में आके 2-3 घंटे स्पेंड किया. आई रेस्पेक्ट योर टाइम वेरी मच. ओके, सो मेरा यू ट्रस्ट मी, यू स्पेंड ऑलरेडी 2-3 hours. इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट इट एंड डेफिनेटली help for your exam. That will happen, no doubt in it, irrespective of strength and all. I don't mind. Okay, it will take. I'm saying about the future perspective. Okay, chalo, let's continue yaar. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री यही से आया. 9th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट. whoever satisfies that, उनको कहते हैं हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग. So you can see here, this is not a self complementary code, but these 3 are self complementary codes. ठीक है, चलो. Here, if you see, this is not self complementary, but ये तो sequential code. Sequential code का मतलब क्या होता है सर? If you add one number to this, you get the next number. If you add one number to this, you get the next number. If you add one number to this, you get the next number. But these are not sequential codes. If you add 1 to this, you don't get this number. If you add 1 to this, you don't get this number. But this is sequential. If you add 1, you will get it. Okay. So you can see the BCD and excess 3 are sequential codes. Sequential का मतलब क्या sir? If you add 1 to the previous number, you get the next number. So excess 3 is self complementary also. Excess 3 is unweighted, वो तो weighted है. ठीक है, चलो. Now let's go for its arithmetic operations. Okay, so see here, we are going for the next part. BCD arithmetic. Okay, suppose in your computer
इफ़ यू वांट टू डू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ BCD एडिशन, BCD में आप ऐड करना चाहिए तो हमेशा वी डिस्कस अबाउट एडिशन ओनली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है. यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एडिशन बाय कॉम्प्लीमेंट्री, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू द BCD एडिशन. इसमें रूल्स क्या होता है, रेगुलर एडिशन से कोई भी डिफरेंस है क्या, और इट विल बी द सेम और नॉट. लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल. ओके, सो गाइस आपका वीडियो पे लिंक आया ना? यस गुरु, थैंक यू फॉर अस. ओके, फॉर दोज हु आर अटेंडिंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर यू. आई विल डेफिनेटली हेल्प फॉर यू गाइस. आपका वीडियो में लाइव चार्ट में लिंक आया ना, दैट लिंक प्लीज सेव इट. दैट इज फॉर द 12:30 PM का स्पेशल क्लास फॉर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सेशन. ओके, चलो चलो चलो, नो प्रॉब्लम. राइट, सी हियर, BCD एडिशन बताने के पहले आई विल डू वन थिंग यार. ये पूरा डेफिनेशन इफ यू स्टडी इट विल बी वेस्टिंग योर टाइम. सो मैं ये करता हूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. What is the 64 plus 28? 64 plus 28 is 8 plus 4, 2 and 1. 1 plus 6 plus 2 is 9. Right. Chalo. If you do it in the BCD format, BCD में 6 is 0, 1 0, 0 1 0 0. 20 is and 8. Right, so if you add these two, this will give you 1 1 0 0. ये तो 1 1 0 0 दे रहा है भाई, ये दोनों ऐड करो. you add these two, you get 0. 1 plus 1 will give you sum 0 carry 1. 1 plus 1 sum 0 carry 1. What is this? 8. What is this hexadecimal equivalent? 8C hexadecimal. गलत है ना? आपको क्या चाहिए सर, आपको क्या चाहिए? यू नीड इन द फॉर्म ऑफ BCD में व्हाट इज द राइट रिजल्ट? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 9 and 2 सेपरेटली. 92 का मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है 1 0 0 1 0 0 1 0. मुझको ये चाहिए 1 0 0 1 and 0 0 1 0, बट मुझको ये आया. ठीक है, व्हाट शैल आई डू? How to convert this result into this result? This is what we call the algorithm of BCD addition is. हम चेक करना चाहिए BCD में वैलिड नंबर ये होता है if the number is in the range of 0 to 9. 9 से ज़्यादा है तो if this number is greater than 9, add 6 here. It is not greater than 9, छोड़ दो. 0 1 1 plus 1 2 1 plus 1 2 and here 1 plus 0 1 and 0 0 1. This will give you the valid answer. So one rule is if a particular nibble is more than 9, add 6 to that particular nibble is one rule. Another rule भी है. Why to add 6 sir? आपको डाउट आएगा, क्योंकि this we discuss in the combinational circuits again, but मैं तो roughly बोल रहा हूँ. 1 0 means 1 0 1 0 in the binary. Okay, but in the hexadecimal, in the BCD, it is 1 followed by 4 zeros. This is actually 16 and 10. दोनों में difference कितना? 6. That's why when 10 comes, to convert into 1 0, we add 6. This is the reason we are adding 6 here. When 12 comes, you should convert into 1 followed by 0 0 1 0. वो number आने के लिए difference कितना है? 6. Okay. So this is the reason why we are adding 6. So let me take one more example. Then I will frame the rules. 64 and 36 ले लो. Okay, then 6 plus 4 is how much? 0 and 1 and 10. Okay, 64 के लिए you require 0 1 1 0 0 1 0 0. 36 का मतलब 0 0 1 1 0 1 1 0. Add them here. 0 1 1 plus 1 sum 0 carry 1 and here 1 1 plus 1 sum 0 carry 1 1 plus 1 sum 0 carry 1. Now you see this is greater than 9. इस केस में add 6.
0, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1. One plus 1, sum 0, carry 1. Again, this is greater than 9, add 6 here. Okay, 0, 0, 0, 0, 0, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1. This is equal to 100 in our representation. Okay, so let me give you one more example, then I will conclude all of them in a single page in the rules. 29 plus 48 कितना होता है सर? 777. ठीक है, 29 का मतलब इज 0010, 9 is 1001, 4 is 0100, 8 is 0100, 1 plus 1, sum 0, carry 1. Okay, so here 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा. Right. So here, if you see, the result is a 71. It is not equal to 77. Na? You are expecting 77. Your answers are less than 9 only, but you got a wrong answer. So why I am getting a wrong answer? Because there is a carry here. इसका नाम है auxiliary carry. Whenever you get auxiliary carry here, then you should add 6. Then you get the valid answer. Yes sir, 7 and 7. Sir, how to remember all these rules, sir? Previously auxiliary carry nahi occurred. Auxiliary carry you should check it in the first edition only. After that you should don't check it. Only first edition mein auxiliary carry aayenge to you should add the 6. Okay. After the first edition, if you get auxiliary carry, okay, add 6. Otherwise greater than 9, add 6. After that second edition mein even you get this, don't worry about it. Second edition mein you should check only if it is greater than or not. Sir, how to remember, sir? Remember याद करना नहीं चाहिए भाई. Just frame your own rules. Take one example. आपको पता है 77 आने के लिए क्या करना वो करो. कुछ भी करो, result में 77 लाओ. You know the result in the decimal. Just do whatever you want and convert into a valid BCD result. That is the simple way you can remember your what we call rules. But my rules there are. Listen here. These are the rules. When we add two BCD numbers using a binary addition के द्वारा हमने दो BCD numbers add किया. We have added two BCD numbers using a binary addition. Then, if the lower nibble, lower means last 4 bits, is greater than 9. If this is greater than 9, or auxiliary carry is the carry coming from the lower nibble to higher nibble. Any one of them is true, add 6. Okay. Otherwise, to the lower result. Similarly, if higher nibble is more than 9, or MSB from the carry is 1, in the addition, if you get this carry, then you also add the 6 to the result. In both the cases, you should add 6. That is what we call BCD arithmetic. Is it clear? Yes. Yes, शंकर. ठीक है, चलो let's go. Similarly, how to do this operation in the XS3, guys? Time कितना हुआ यार? अरे यार हो रहा है. चलो, no problem. We'll complete at least up to gray code. Then I will leave tomorrow with the complementary part. That mostly tomorrow मैं तो plan कर रहा हूँ to complete your syllabus of first chapter number systems. Okay. So today I may take few more minutes, guys. So 5-10 minutes maybe I will taking extra because gray code भी cover करना चाहिए. ठीक है. XS3 edition क्या होता है सर? XS3 में rule तो simple. When we add two XS3 number using a binary adder, if you get a valid XS3 result, to get we need to perform following. Previously 6 add किया ना, here we should add 3. But also there is a rule. Carry आएंगे तो 3 add करो. Carry नए आएंगे तो 3 subtract करना. क्योंकि I will show you with example. See here.
72 na. Let's take this example. 2 का मतलब excess 3 में 2 is equal to 5, 3 is equal to 6, 4 is equal to 7, 9 equal to 12. Now 0, 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 1 plus 1, sum 1, carry 1, sum 0, carry 1, then 1 plus 1 plus 1 is 3, ठीक है, no carry. Okay, here there is a carry. When you have carry, see here, to get a valid result, when you have a carry, क्या करना? Add 3. If you don't have carry, subtract 3. How to do subtraction? अभी तो छोड़ दो, मैं explain करता हूँ combinational circuit समय पे. Simply here, it is 13 minus 3 is 10. Here 2 plus 3 is 5. So 10 का मतलब excess 3 में 10 is 7, excess 3 में 5 is 2. आपका आंसर आया. excess 3 में 10 is 7, excess 3 में 2 is equal to 5. So here if you get a carry, add 3 to that nibble. If you don't get a carry, subtract 3 from the nibble is the rule. Okay, that is about your excess 3 addition. इसके बारे में problems करेगा हमारा special class में, don't worry about it. So right, the next one, gray code. ग्रे कोड में एडवांटेज क्या होता है सर? इट इज ए यूनिट डिस्टेंस साइक्लिक कोड. ओके, ग्रे कोड इज यूनिट डिस्टेंस साइक्लिक कोड. ओके, साइक्लिक कोड यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नंबर्स ओनली 1 bit वेरी. बिटवीन any two adjacent numbers only 1 bit varies. एक ही बिट चेंज होता है, ठीक है. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. ओके, सो प्लीज सी फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक द ग्रे कोड. ओके, ग्रे रूल्स बताता हूँ फर्स्ट. पहले बाइनरी टू ग्रे. आई हैव ए बाइनरी नंबर. हाउ टू कन्वर्ट इनटू ए ग्रे कोड? आई एम गिविंग यू द परफेक्ट रूल फर्स्ट, देन आई विल गिव यू शॉर्टकट ऑल्सो. इफ यू वांट GI, द ग्रे कोड इज इक्वल टू बाइनरी ऑफ फर्स्ट बिट MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए. देन GI इक्वल टू BI XOR with BI plus 1. what is this sir? XOR operation. XOR is, I will explain it in the what we call logic gates topic. XOR में दोनों zeros, दो inputs ऐसा है तो it will give you 1 when both are different. Okay, this is XOR operation. We will discuss it later. Next, आपके पास gray है तो how to convert into binary. Okay, here BI equal to GI for MSB. Okay, and BI equal to B means binary. I will explain with example guys. See here. आपके पास ग्रे कोड है तो ग्रे कोड का मतलब सी हियर. इफ यू हैव ए बिट B3, it is as it is copied in the G3. Then this will be, this symbol is called XOR gate guys. XOR with the next bit
to give you G2. This will be XOR with the next bit to give you G1. And ये वाला है ना, इसको XOR करके next को देता है sir to give G0. This is how you convert a binary number into gray code. Similarly, you have a gray code to convert into binary. First bit as it is copy करेगा. Now this result is taken, okay, and the this one will be taken. You get B2. This result will be taken and B1. This result will be taken and B0. This is how you will be converting a gray code into its equivalent binary. Very good sir, fine sir, समझ हो गया sir. Let's take one example to show that gray to binary conversion. For example, binary number 1010. What is its equivalent gray code? See, first bit copy as it is. These two you do XOR operation. Yes, what is the XOR of 1 and 0? 1 and 0 ka XOR is 1. Next, these two you do the XOR. 0 and 1 ka XOR kya hota hai sir? 1. This example become boring. Okay, let me take this example. Now 1 and 1 का XOR क्या होता है sir? 0. This is the gray code of this binary number. Suppose you have a gray 1110. What is its equivalent binary? First bit is copied as it is. These two, if you do XOR, what is the result? 1 XOR with 1, 0. 0 XOR with 1. Result and the previous, this one, you should take, you get 1. You take this XOR. Okay. Then what do you get? 1 and 0 will give you 1. Same answer है ना? 1011 का 1011 gray is 1110. 1110 का binary is 1011. This is how you convert binary to gray or gray to binary. ये करना क्यों सर? ऐसा करेंगे तो क्या फर्क होता है सर? That I will explain. Okay. What is the advantage? Where we apply this gray code, I will explain you. Before that, sir, suppose examiner asks you to find the top first 16 gray codes. I will give you a best shortcut. See here. Instead of doing this XOR and all, I will give you the best shortcut for the gray code. Please see. First you take here 0. Then 1 ले लो. What is the mirror image of 0 and 1? 1 0. Okay. First you take here 0 1. Here you take its mirror image. Then here you keep 2 zeros. Here you keep 2 ones. Then again take its mirror image. That is 1 0 1 1 0 1 0 0. Then what you need to do is keep 4 zeros here. 4 ones here. If you want repeat this process, this will give you gray code of 0 to 7. If you want, you can cross check it. Okay? You see, between any two adjacent numbers, only you see this bit is common, this bit is common, a bit change हो गया, a bit change हो गया. Between any two adjacent, only one bit changes. Between any two adjacent, only one bit will vary. That is the advantage of the gray code. You can see here. You can draw this easily. 0 1 इसका उल्टा ले लो, 2 zeros 2 ones इसका उल्टा ले लो, all zeros all 1 इसका उल्टा ले लो, 8 0 8 1. You can extend this to represent without XOR operation. Okay, so listen carefully. What is the advantage of this sir? इससे क्या advantage होता है sir? Okay, listen. For example, let me give you one example. ये आप बचपन पे खेला ना, ठीक है? सो आपके पास कोड व्हील है, ठीक है? सो यू जस्ट टिल्ट इट. मैं तो टिल्ट नहीं कर सकते यहीं पे. यू जस्ट टिल्ट इट, देन यू विल योर व्हील विल स्टॉप एट समवेयर. ओके, or suppose there is a ball which is rotating here. When the ball stops there, you get some particular letter. Okay, so there is a code wheel guys. Simple example is when this example you just connect to some radar system or somewhere,
where the shaft ka angular position is coded by the coding wheel. When it is at this position, it is coded with some code. It is here, it is given as some code, 1 degree, 2 degree, 3 degree. It is not exactly same, I am saying, okay. So here, if you take in this kind of example, so binary example. Binary में क्या होता है sir? Suppose I have a number 3. Presently your answer is 3 by. Then if it want to go to 4, all bits may not change at a time na. So there is a chance between 3 and 4 you may get first this bit is only changed. Earlier days में cricket score आता है ना, one number will come. 99 के बाद 100 आने के लिए पहले एक 0 होता है, next 0 होता है, next 1 आएगा. Same way here, because of different propagation delays in the internal circuits, maybe first bit might change first, then second bit changes, then your third bit changes and give the final result. So in the binary, what is the disadvantage you have in this kind of systems? Mein between one state to another state, there is a chance of getting transient states. This kind of errors cannot occur if between any two adjacent numbers only one bit varies na, then until it varies it is in the previous state, once it varies it comes into the next state. Yes or no? Here it is the 2, next it will become this one. So the advantage of the gray code is when you have the coding system, you can see this answer, you can answer this question easily. या के मैप में यूज करेगा वो भी सही है शंकर. Yes Sachem, this is same as comprehensive but you should attend the special classes, that is the only difference. Course तो content तो same देता हूँ in the best way but not sign like comprehensive में class by class YouTube पे चलते हैं ना, यही पे problem session will be on the Unacademy platform. Okay, tell me yaar, what is the answer for this question? In a large radar installations, it is required to translate the angular position of the shaft into a digital information, the most generally achieved by achieving a code wheel. पर अनएम्बिगस का मतलब विदाउट एनी डाउट सर, दैट इज एक पोजीशन पे दूसरा पोजीशन पे बीच में डाउट नहीं आना चाहिए, तो दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट नहीं आनी चाहिए, तो कौन सा कोड यूज करना? ऑक्टल बीसीडी ग्रे कोड. ठीक है, दिस इज द आंसर. वेरी गुड. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. वी विल डिस्कस अबाउट द टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट डाटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट टुमारो. ओके, सो स्पेशल क्लास पे आ जाओ 12:30 पे. थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10-15 मिनट. I will also take my breakfast. Then we will meet at 12:30 guys. So special class में problems क्यों ले रहा हूँ? These are very much interactive for you guys. इसमें if you do the problem, we can participate in the poll. You can check your performance with your fellow students and you can get the notes, and class is more and more interactive because that is the dedicated learning platform. Okay. So I want to reiterate that your what we call present 6+3 is there. If you take 6 months, you get 3 months extra. Whenever you join, use the code Shankar10. Okay. This is the Ask a Doubt feature in Unacademy Plus platform, Unacademy platform, which is free for you. Just attach a pic. Just go to Unacademy app, type Ask a Doubt, and attach the pic. Okay. And if you follow the proper guidelines, you will be getting the answer. Okay. So Iconic में you will be getting 1-to-1 mentoring, guys. So this is the new feature. You can use my code and join for Iconic if you want personalized guidance. So combat is going to happen on this Sunday 12th September. Use my code guys, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, and also you have a chance to win the scholarship from the top 100 ranks में आप मैनेज किया तो you get 25, 50, 75 और 100% on the subscription. Okay, 20 questions मिलेगा. This is a chance to compete with your fellow students and know where your performance is. So मैं notes कल तक शेयर किया ना, आज और परसों का दोनों मिलके tomorrow I will be sharing in our groups, corresponding telegram groups or whatever that are available in the video description. Okay, so मेरा introduction तो first पहले देना चाहिए but end पे आया, no problem, as you know me, no need to introduce in every lecture. ठीक है, thank you guys, bye bye. फिर मिलेगा 12:30 पे. 12:30 we will be meeting there. If you have any doubts and all also feel free to ask me. लव यू ऑल, बाय बाय. फिर मिलेगा टुमारो 10:30 ओनली. टुमारो कोई चेंज नहीं. ओके, टुमारो 10:30 AM विल बी मीटिंग फॉर द यूट्यूब. फॉर प्रॉब्लम्स आ जाओ 12:30 पे. दैट इज अवेलेबल इन द चार्ट. जस्ट डायरेक्टली कम टू द क्लास. ओके, इफ इट आस्क द कोड इन द क्लास, जस्ट यूज माई कोड Shankar10. ओके,
Thank you. Bye-bye.